So good morning, everyone. So we're going to start where we left last day. Uh, that is air pollution. So I think so. We were discussing in detail about air pollution, all the aspects of air pollution, and specifically when we're discussing this particular matter, this is something very dangerous uh, because every time when you see a data of air quality index that is there when you see, but generally this is something very dangerous when you're talking about NCR region. Every time the news they are flashing, okay, particular matter 10, particular matter 2.5 in this region is this region is this. Okay, so I told you about particular matter last slide, last class, but let me tell you in detail. This detail, the particular matter 10 means particular size less than 10 micrometer, and PM 2.5 is a subset of. I told you subset of a PM 10, basically. Okay, subset 10 size less than, okay, 2.5. And in specific cases, there are chances that when the fine, very ultra fine particles are there, these ultra fine particular are called PM 1.0, that is particle size less than 1 micrometer, and these are very, very dangerous. So basically, when you talk about PM 10, they are coarse as per size, they can carry the coarse particles, so they can be easily inhaled. So they are very dangerous for a person suffering from the respiratory diseases. And whereas when you have a PM 2.5, which is more dangerous in terms of air pollution, in terms of air pollutants, and this is something it can launch to your lungs, and this is very dangerous. And once you have to ultrafine a particular type of particular materials, and it can really go to your blood because the particle size is very less, so it can dissolve in water, dissolve in blood, so go, so it can block the arteries, all kind of things are there. So now onwards, now see, we have a danger, we have a particular concerns about these kind of particular matters, so we have to take care of these particular matters, and how we can take this from this kind of particular matters. So those things we're going to discuss today in this class. And first of all, we'll talk about pollutants first. So this thing I have told in the last class, this is the air quality index categories and range. So when so talk about categories and range, so you have a particular you know you know you have these categories of PM10, nitrogen oxides, NOx, SOx, carbon monoxides. So these are the 8 priority pollutants, basically as per the characterization of EPA, Environmental Protection Act, which you generally measure. Okay, on this basis, the air quality index is being defined. So that you know very well, from defined to severe. And I told you once stubble burning is there in this region itself, in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and all kind of states, and Delhi NCR. And most of times you have a severe category, and this is something very dangerous. Now, before moving forward, this is something I'm talking about. So air pollution disaster Punjab specifically, and you know very well the people sitting here and listening to me, they are from Punjab and Haryana, and they may be agree with me. These last 2 months, like October and November, is horrible for these particular states. Horrible for these particular kind of states, where near about 19.7 million tons of paddy straw is burnt. That's a huge number. Sometimes we really think, okay, do we think we are living in that country where we have a some freedom to survive? And if we want to counter this, you can come to that states in Punjab and Haryana for October and November. And sometimes you can imagine कि एक दो दिन ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि हम भट्टी के अंदर बैठे हुए हैं. Such a huge, like stubble burning is there, huge, this contamination is there. So Punjab air quality index, reasonably it has fallen to a lower category, poor category. And this is much severe when you talk about Diwali, because Diwali, lot of cracker burning is there. I'm not saying we should not celebrate Diwali, but it coincides with basically a stubble burning. So respirable suspended particulate matter, they reasonably cross permissible limits of 100 microgram, and that is more than 300 times what is being recommended. So that's why I'm saying all of you. So
because generally I say to everybody, okay, like you are computer engineers, you are electronics engineer, you are civil engineers. So when you are residing this kind of country or this kind of cities, Punjab, Haryana, NCR, state or this kind of thing, so you have a equally chance of getting yourself troubled from this kind of severe air pollution, and a lot of people are dying. And so when people are dying just because of this disaster, it is not like that they have specific categories that they will die. No, everybody is going to be die. So you need to think about a concrete solution, technological intervention, basically, to get rid of this kind of problems. So generally I was discussing about last time, uh, the air purifier. Somebody was, putting in chat box that air purifiers are there. But now listen one thing very carefully. ठीक है, प्रॉब्लम्स आर देयर. बेटा वाटर की प्रॉब्लम आई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वाटर की प्रॉब्लम आई. और आज से पहले अगर 10 15 20 साल पहले की बात करूं, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा आगे चलो थोड़ा सा बेटा, और पेरेंट्स के टाइम पे भी आ जाओ, तो कभी भी किसी घर में आरओ नहीं लगा होता था बेटा, वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा होता था. ठीक है, और आज ये ट्रेंड आ गया है कि घर में एक बेसिक नेसेसिटी बनी हुई है कि वी नीड टू हैव अ वाटर प्यूरिफायर. और उसके बगैर आप किचन नहीं ऑपरेट कर सकते, पानी ऑपरेट नहीं कर सकते आप. नंबर 1. नंबर 2, अब ये टाइम एनसीआर में तो आ चुका है और बाकी इंडिया में आने वाला है बहुत जल्दी. पंजाब हरियाणा में भी ऑलमोस्ट आ गया है कि यू नीड टू हैव अ एयर प्यूरिफायर इन योर होम. एनसीआर में तो लोग बता सकते हैं, बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, दे हैव अ मैंडेटरी एयर प्यूरिफायर इन देयर होम, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है. और पंजाब हरियाणा में भी लोगों ने परचेज करना शुरू कर दिया. एंड द कंपनीज आर रियली pouring in with a different kind of air purifiers, this air purifier. So just imagine how we can say that we are leading to normal life. Okay, so slowly and slowly I think so. Just imagine कि टेक्नोलॉजी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो छोड़ो. टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट पता है कहाँ पे कर रही है बेटा? टेक्नोलॉजी में बता दो कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है. मैं बताता हूँ बेटा, आप ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हो, टेक्नोलॉजी सिर्फ वेंटिलेटर को सपोर्ट कर रही है. कौन सी वेंटिलेटर को सपोर्ट कर रही है? वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो है वो आपको वेंटिलेटर में सर्वाइवल के लिए सपोर्ट है वो. एंड मैं चाहता कहां पे हूं कि बेटा व्हाई टू गो टू वेंटिलेटर, वी शुड हैव अ टेक्नोलॉजी इन हैंड. दैट्स अदर कंट्रीज आर वर्किंग बेटे. दीज कंट्रीज, अदर कंट्रीज, मैंने आपको 20 एग्जांपल दिए उन कंट्रीज की बेटा, और हर चीज जो मैंने एग्जांपल दी है एयर और वाटर और एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है. कंप्यूटर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे काम कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर मार्केट की अपॉर्चुनिटी में देखा जाता है कि पेनिट्रेट कहाँ पे करना है. अब देखो एयर प्योरीफायर के अंदर अब कितनी ऑर्गेनाइजेशंस जंप इन कर गई हैं, और आपको पूरा माइंड वॉश करके आपका कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एयर प्योरीफायर परचेज करो. एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर रियली कमिंग इन टू इंट्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ एयर प्योरीफायर. दिस प्योरीफायर. और उस एयर प्योरीफायर में कुछ नहीं है बेटा, आप भी बना सकते हो. मैंने अपने बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से एयर प्योरीफायर बनाया एक देसी तरीके से, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एनर्जी एनवायरनमेंट. तो हमने बहुत अच्छा बनाया बेटा वो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी मेरी पिक्चर पड़ी हो तो मैं दिखाऊंगा बच्चों के साथ. एंड दैट ग्रुप एक्चुअली वाज इन डेराबस्सी कैंपस. तो डेराबस्सी कैंपस में मैं कहीं नॉमिनेट हुआ तो मैं कहाँ वहाँ पे गया बेटा, वहाँ पे तो वहाँ बच्चों को प्रोजेक्ट करवाया मैंने. एंड दे स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर वी आर लिविंग इन डेराबस्सी कैंपस एंड दिस डेराबस्सी कैंपस इज वेरी पोल्यूटेड बिकॉज एवरीवेयर इट इज बीइंग इंडस्ट्री. So we made air purifier and the student was awesome. So we made air purifier just like a cylindrical shape, I can say thing with the two suction pipe from the sides, and the center one, the cylindrical one, is a air purifier, the filters, different kind of filters, and that was working fine. So see, you are equally competent enough to make a filter, so design a filter accordingly, so you can really jump in market. और अभी भी बता रहा हूँ चीज के लिए, ठीक है, आपको भी ओपनली बोल रहा हूँ कि मार्केट इज ओपन नाउ. If the market is open now, you can also jump in. अभी भी जंप इन कर सकते हो. नीड नॉट टू वेट फॉर द 4th year टू कंप्लीट टू गेट अ डिग्री. मैं एग्जांपल देता हूं आपको. जब एनसीआर में आगे मूव कर जाऊंगा बेटा, पहले आपको एग्जांपल दे दूं. ओके, और जब मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा, एनसीआर की बात कर रहा हूं, सेम टाइम आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने नोज स्ट्रिप्स बना के मार्केट में लॉन्च की. नेट पे देखना मिल जाएंगी आपको, आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, नोज स्ट्रिप्स.
नो स्ट्रिप्स क्या थी कि while walking, while roaming and while driving, while moving out, you can put this nose strips on your nose, and these nose strips are actually acting as a filters. And these nose strips are not very costly, and you can throw it out. You can really throw it afterwards, and you can take another nose strip. See, you have to think about the opportunity. You have to think about how we can encash this opportunity. So this is something very much, I'm talking about कि आप पढ़ते रहो बेटा, स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। आधे बोलेंगे सर स्लाइड्स आ गई एलएमएस पे, सर आई नहीं है, आ गई हैं, दे दो रट्टा मार लेंगे बेटा। वही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज रिपीट कर रहा हूँ ये चीज के बारे में कि कितना रट्टा मारोगे बेटा, कितना पढ़ोगे इसके बारे में, कितनी चीजों को पता आपको। अपॉर्चुनिटी इनकैश कब करनी है बेटा। तो मैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूं ना, मैं अभी आपको फ्रैंकली बोलूंगा, डोंट माइंड इट, कि आपके सेमेस्टर शुरू होए को 3-4 महीने हो गए, सो आई एम सेइंग यू आर वेस्टेड योर 3 or 4 months। वाई? बिकॉज जब 3-4 महीने में रट्टा ही मारा बैठ के, स्लाइडें पढ़ी हैं बैठ के, रिकॉर्डिंग ही सुनी है आके, तो 4 महीने तो वेस्ट हो चुके हैं आपके बेटे। तो मैं कह रहा हूं कि अभी से आप ग्रुप बना के कोई एक स्मार्ट थिंकिंग में कोई प्रोजेक्ट के बारे में काम करो। कैसे? जो मार्केट में रिक्वायर्ड है बेटे। आपको पता है कि इंडियन मार्केट ओपन अप है, जितने भी बाहरी फॉरेन कंपनीज हैं, व्हाई दे आर कमिंग टू इंडिया? एक ही आंसर है कि इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत ही इजी है। क्यों? पॉपुलेशन बहुत डेंस है, अंडर डेवलप्ड है, और रिक्वायरमेंट जो मर्जी लॉन्च कर दो यहाँ पे, सक्सेस रेट तो पूरा ही है उसका। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट फेल नहीं होनी ना, फेल होने से पहले उसके 2 करोड़ यूनिट तो बिक जाएंगे, क्योंकि 2 करोड़ जनता तो बेवकूफ बैठी हुई है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि देयर सो मच अपॉर्चुनिटी व्हेन यू कैन रियली गो थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, और सभी में से एग्री करेंगे, बाद में या डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ बाद में कभी इसके बारे में, ठीक है। मैं आगे मूव कर जाता हूँ बेटा। अभी भी मार्केट में एयर फिल्टर इफेक्टिव नहीं आए हैं, जो आए हैं वही इनकैश कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बच्चे। design a portable design a portable this particular kind of air filter effective। so कार में गए तो कार में उठा के ले गए, पिकनिक में उठा के ले गए, होटल में गए तो होटल में उठा के ले गए, रूम से उठा के पोर्टेबल ही बन रहे हैं, बट और पोर्टेबल बनाने की कोशिश करो उसको। नंबर 1, तो देखो और कितना इसको इफेक्टिव बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि दैट्स व्हाई प्रॉब्लम इज देयर बेटा। ठीक है। सो दिस इज समथिंग टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू नो बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग्स के होते क्या हैं चीजें। पर्टिकुलर मैटर तो ठीक है बेटा, बट यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ pollutant you are handling। So when going to classify the pollutant, similarly you have a primary air pollutant and secondary air pollutants, and no doubt it is being said that secondary air pollutants are more dangerous than the primary air pollutants, and primary air pollutants are those which really, when they're released, pose a health risk in unmodified form, means raw form. They are going to pose health risk in the raw form. As such, they are released. And this means they are directly emitted from identifiable sources. Identifiable sources means you can see, say this industry is there. This industry is polluting air by emitting nitrogen oxide. This industry is releasing a sulfur dioxide. This industry is emitting carbon monoxide. कैसे identify करोगे आप? Sample लो, वहां पे जाओ, you go to chimney and take a sample out, and when you sample out, do the analysis. Once the analysis is done, you can easily identify which actually pollutant is being released by factories, towns, anywhere. These are primary pollutants. And secondary pollutants are those when the primary pollutants, they really interact with one another in some particular kind of atmosphere, light, temperature, this one, to produce a new harmful compound. You never know what is going to form. Sulfuric acid is being formed. Ozone is being formed. The hydrogen peroxide is being formed. Nitric acid is being formed. How they are being formed? They are basically formed when the two or more primary pollutants, they combine each other under certain circumstances, like they need sunlight, they need this particular thing. So those kind of favorable conditions actually going to form the secondary air pollutant. Now once secondary air pollutant is formed, you can never identify, they cannot be identified from which sources actually they are being released, and how they are being formed, and where they are being formed.
Okay, so it is just like a very dangerous part when you talk about secondary air pollutant. So once about primary pollutant components, I'm talking about first of all this thing, SPM. Generally in air pollution, this is a common term that is being used, that is SPM, suspended particulate matter. So this is one of the 6 environmental protection agencies criteria pollutants. The EPA have the classified 6 criteria pollutants: SOx, NOx, monoxide, lead, VOC, volatile organic carbons, I told you, and PM. This is PM talking about. Particulate matter, suspended particulate matter. So this particular matter is a complex mixture of airborne particles. You're talking about it can different size. I told it can different size. It can different in origin. It can be released from industries. It can be released from the vehicles. It can be released from the volcanic eruptions. It can be released from the forest fire. So it is a different thing. So it can have different chemical composition. So that's why it is very much dangerous. Now this SPM, the suspended particulate matter, they have a capability that they can be suspended. They can remain suspended in air for extended period of times. So it can be in the form of smoke, it can be in the form of dust, it can be in the form of vapor. Okay, so that's why you sometimes see a haze in those particular states where the maximum industries are there. Go to Ludhiana, go to Bathinda. Generally in these areas a lot of emissions are there. When a lot of emissions are there, then once lot of emissions are there, there are chances that a lot of suspended particulate matter are being released into the air. Now once these suspended particles are there, so in winter conditions, especially when a lot of water vapors are there, so these water vapors, they really you know serve as a platform. They can combine with such suspended particulate matter present in the air released by this industry, so they can make some kind of haze in the atmosphere which reduces the visibility. So you need to identify what is fog, what is smog, and there's a difference between fog and smog. You can go through. Once you go through, you can get back to me for these kind of things. And no doubt finer of these particles, so these can actually lodge into our lungs when you breathe in, and that's why we have respiratory problems. So that's why now these days the people they start complaining about breathing problems, because the finer particles, these are being released into the air and from the activities of vehicular pollution and industrial pollution. And once they are being lodged into air, the water vapor and other particular in sporting materials, they retain those particular suspended particulate matter in air. And when they remain in air for longer number amount no period of time, so you just pass through that kind of atmosphere, you can reasonably inhale those kind of things. So once you inhale, you can really take to your lungs. Okay. And this is something very much important when they talk about primary pollutant, and this primary pollutant is carbon monoxide, and so this is very dangerous. And this is just because of incomplete burning. और इनकम्प्लीट बर्निंग की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा बेटा आप सबके साथ, ठीक है? अगर आपको पता है ये पढ़ लो बेटा, यू कैन गो थ्रू, इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू थिंग टू यू, बट हम इसकी बात डिस्कस कर रहे हैं जो इसमें से अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। इसको पढ़ लो जरा सभी एक बार, मैं ये नहीं बढ़ाने वाला, मैं स्लाइड्स रीड नहीं करवाने वाला आपको, लेकिन इसमें से क्या एक इनोवेशन निकल के सामने आती है वो मैं बताने वाला हूं, और वो कोई नहीं बताएगा आपको। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू कम टू क्लास। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब मोनोऑक्साइड की जब बात हो रही है, पढ़ लो इसके बारे में, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, सबको पता है इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स के जो भी हम यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं, डीजल सब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? और बाकी इसके इफेक्ट्स आपको पता है। अब बात कहाँ पे आती है बेटा, बात यहाँ पे आती है कि इंडिया में 70% पॉपुलेशन, यू एग्री विद मी, लिव्स इन विलेजेस। और आप सबके भी बैकग्राउंड विलेज से होंगे, और मेरे से आप एग्री करोगे। तो जब विलेज की बात हो रही है बेटा, so 70% population lives in village, and you just know when you go to the villages, you know very well, वहां पे मोस्टली अभी भी 70% जो पॉपुलेशन है, उसमें से 90% जो पॉपुलेशन है, वो जो खाना बनाती है वो ओपन चूल्हा पे बनाती है। अंगीठी बोल देते हैं कुछ पंजाबी वाले, अंगीठी बोलते हैं, ओपन चूल्हा बोलते हैं उसको।
और एलपीजी वहां पे है, लेकिन वो बहुत कम एलपीजी यूज करते हैं, वो अभी भी बर्निंग जो है ओपन करते हैं, ओपन चूल्हा होता है घर के अंदर, घर के बाहर। ओके, तो दे डू द बर्निंग ओवर देयर। सो वन डू बर्निंग ओवर देयर, उसमें क्या डालते हैं कुछ भी काउ डंग एक्स वाई जेड डालते हैं उसके बीच में, और जब डाल के उसके ऊपर खाना बनता है ना तो पेट है कि उसमें बीच में एक्चुअल ऑक्सीजन पेनिट्रेशन इफेक्टिव नहीं होती है। जब ऑक्सीजन पेनिट्रेशन हर एरिया पे इफेक्टिव नहीं होगी, तो आपको ये रीजनेबली पता है कि व्हेन दिस ऑक्सीजन पेनिट्रेशन इज नॉट इफेक्टिव एट ईच एंड एवरी एरिया दैट चूल्हा वी आर टॉकिंग अबाउट, the complete burning will not be there. When the complete burning will not be there, जो वहां से धुआं निकल रहा है, that will be getting more carbon monoxide along. और ये प्रूफ हो चुका है बेटा, 70% population living in that area with a 90% burning, open burning is for food, open burning is being done on the chulhas, and there's a maximum release of carbon monoxide. So once the carbon monoxide is there, no doubt you will have these kind of effects, no doubt. It lowers the amount of oxygen, all kind of effects you know very well. Now, opportunities कहाँ पे आती है? आज भी मार्केट ओपन है, गवर्नमेंट ये कह रही है, आज भी नेट पे उठा के देख लो बेटा, जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, जितनी भी फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की, वो हो रही है कि जितने भी टेक्निकल पर्संस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इंक्लूडिंग आईआईटी, थापर की बात ही छोड़ दो बेटा, आईआईटी के पीछे पड़ी हुई है वो, तो थापर तो बाय डिफॉल्ट आ गया कि यू डू सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू विलेजेस, टू रिफॉर्म विलेजेस, and they are giving crores of funds to IITs and other these institutes. If you have the technology which can be reasonably implemented to the villages, and they can uplift their daily living, all kind of stuff, so you can take this as a venture. तो उसमें सबसे बड़ा वेंचर निकल के आता है इफेक्टिव स्टव डिजाइन, चूल्हा डिजाइन। और उसमें फिर बात मत करना आप कि सर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं ये इंजीनियर हूं। अरे भाई, जिसने एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करनी है, मैं आपको 36 एग्जांपल दूंगा बेटा, उन्होंने क्या क्या किया है आईआईटी के बच्चों ने और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों ने। सी, आपको अभी पता चल जाएगा कि इंडिया की मार्केट कितनी डीप है। अगर आप ऐसा कोई डिजाइन करते हो, चूल्हे डिजाइन करते हो, तो आपके चूल्हे को अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, चूल्हा स्टोव डिजाइन, कैसे डिजाइन करना है स्टोव, कि स्टोव डिजाइन ऐसे करना है कि उसमें जो फ्यूल वो डाल रहे हैं, वो फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग हो, नंबर वन, मोनोऑक्साइड कम से कम बने, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बने। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम बनेगी, तो बाय डिफॉल्ट एक चीज और उसमें कह रहे हो कि जो फ्यूल डाल रहे हो उससे आपकी बर्निंग एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, नो डाउट आपके पास बर्निंग एफिशिएंसी ज्यादा आ गई है और ज्यादा फूड जल्दी बनेगा उस चीज के लिए। तो ये मार्केट पूरी ओपन है इंडिया में कंटेस्ट में अभी, चूल्हा डिजाइन, स्टोव डिजाइन फॉर विलेजेस। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ये चीज के लिए। तो कहने को अगर आप बात कर रहे हो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड सब पढ़ा दो, पढ़ा दिया, उसमें निकाल के क्या आना आपके पास सामने, अपॉर्चुनिटीज क्या आनी है, मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करनी है चीज के लिए, वो पढ़ना है हमने बेटा। मेरा काम बीटेक के बच्चों को पढ़ाना नहीं है मोनोऑक्साइड क्या होती है, मेरा काम है आपको अपॉर्चुनिटीज बतानी बेटा, वहां से अपॉर्चुनिटी निकल कैसे आती है बेटा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बेटा, मार्केट ओपन है बेटा, मार्केट ओपन है। हर चीज को उस एंगल से देखो। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ मेरी क्लास में बैठा है बेटा, पेंट कैश स्क्रबर बेटा, वो बात की बात है, जो मेरे से बात करोगे ना, तो मेरे पास बहुत इफेक्टिव डिजाइन है जो हम प्लान करेंगे। तो उसमें स्क्रबर ये लग सकता है, बट स्क्रबर बहुत कॉस्टली है बेटा। ठीक है, जो आगे पढ़ाएंगे, एयर पोल्यूशन पढ़ाएंगे, स्क्रबर इज वेरी कॉस्टली, बट यू कैन डिजाइन द चिमनी अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा विलेज में, देखा होगा जिस घर में ये चूल्हा होता है और वहीं पे धुआं होता है, उसके अराउंड ही धुआं बहुत हो जाता है। तो पीपल सिटिंग ओवर देयर, दे स्पेशली लेडीज, दे इनहेल लॉट ऑफ मोनोऑक्साइड। तो डिजाइन है चूल्हा सो दैट उसकी पाइप निकल के घर के बाहर जाके ऊपर छत पे एग्जॉस्ट हो उसका, और उसके कुछ अंदर ऐसे लगाओ सिस्टम, ताकि मोनोऑक्साइड या कुछ बन भी जाए या डाइऑक्साइड बन भी जाए, ब्लैक स्मोक आ भी जाए, तो अंदर कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट लगाओ साइड के ऊपर, जो मेरे डिजाइन में दिमाग में है, तो दे कैन गेट रिड ऑफ ब्लैक स्मोक। Is that okay, everybody? So, man, that's why I'm talking to you this in this particular contest. Okay.
आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से इट्स हार्डली गोइंग थ्रू द स्लाइड्स, पढ़ ली पेपर में आ गई, खत्म है। ठीक है, तो बेटा अगर मेरे से बात करोगे बेटा, मैं मेरे पास टाइम कम होता है बेटा सही बताओ, मेरे पास टाइम कम होता है, और मेरे को ऐसा है कि हर एक स्लाइड में मैं आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज बता सकता हूँ, 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज बता सकता हूँ जो वेंचर को लीड करेंगी। मैं अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं अकेला बंदा गाइड कर सकता हूँ कि बेटा अपॉर्चुनिटीज कहाँ-कहाँ निकलेंगी, काम आपने करना है। ठीक है? एंड सीएफसी यू नो वेरी वेल, सीएफसी बेसिकली दे आर बेसिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो इसके कारण अगर आपने पढ़ा हो तो नो डाउट तभी इसको बैन किया गया था, तभी अल्टरनेट सीएफसीज पे काम हुआ था, बिकॉज़ दे वर एक्चुअली लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ ओज़ोन लेयर। They rise to the stratosphere and they come in contact with other gases, and once they come in contact with other gases, they initiate some kind of chain reactions over there. So these chain reactions are ultimately going to combine with oxygen, the ozone, and they're going to have this reduction of ozone layer. So that's why these CFCs were banned and alternate CFCs have been worked out. Then no doubt carbon dioxide is also there. That is basically you have all the burning activities. Then NOx and SOx. NOx and SOx means nitrogen oxides and sulfur dioxides. So basically NOx, you know वेरी वेल। अब तभी देखो क्या हुआ, जब ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम शुरू हुआ तो जब पता लगा फ्यूल में से बहुत सारा आपका नॉक्स बाहर निकल रहा है, एंड व्हेन द नॉक्स इज कमिंग आउट, नॉक्स इज NO2 NO3 ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग आउट। सो दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बेसिकली कोल जो आपके पास आ रहा है उसके बाद सल्फर बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा उसके बीच में। सो व्हेन इट्स बर्न्ड इन द इंडस्ट्री, गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड nitrogen oxides. Petrol, diesel, again, it is going to emit this kind of things. So, a high temperature, this nitrogen present in the air actually combined with the oxygen to produce NOx, different kind of compounds of nitrogen oxides. Okay, so this is something very dangerous when talking about nitrogen oxide, because it's going to form the nitric acid in air. This is secondary pollutant, and once it's formed, it can really contaminate groundwater. ओके मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके बारे में। देन सल्फर डाइऑक्साइड, नो डाउट सल्फर बेसिकली हमारे फ्यूल्स में बेटा, नो डाउट द फ्यूल वी आर गोइंग टू यूज इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सल्फर, एंड बेसिकली कोल बेस्ड प्लांट जो हमारे इंडिया में बेसिकली हैं, कोल जो हमारा आ रहा है, कोल इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल, एंड दैट कोल इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सल्फर. So when coal is being burnt, no doubt we have some air pollution control devices over there, but you know in tendency a lot of smoke that is being released containing sulfur dioxide, and this sulfur dioxide is actually going to form the acid rain. सल्फ्यूरिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर, आई शोड यू सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओवर देयर। ओके, सो ये कुछ आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट जो मैंने बात की है, एंड ये मैंने बताया कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, एसिड इनको करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब क्या हुआ जब इसमें थिंकिंग आती है बेटा अब थिंकिंग आज जो इसमें आती है एक ये वाली जो मैं अभी करा के चुका हूँ। तो मैंने अभी एमएसटी में लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, और कभी उनको एग्जाम में क्वेश्चन दिया ये वाला थिंकिंग को देखने के लिए बच्चों की। मैंने उनको लिखा कि एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन था, एयर पोल्यूशन क्वेश्चन कैसे डाला, एयर पोल्यूशन को मैंने कोरिलेट किया वाटर पोल्यूशन के साथ, कैसे, लिसन। फिर मैं देखा उनकी थिंकिंग कहाँ पे आती है कि रट्टा वाला है सिर्फ, कि साइड रट्टा मारा खत्म। और मैंने ये थोड़ा बताया भी कभी क्लास में डिस्कशन में, थोड़ा ओवरव्यू बताया, लेकिन उसको क्वेश्चन में पूछ लिया मैंने। उन्होंने बोला कि इन दिस पर्टिकुलर स्टेट लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन इज देयर। So lot of air pollution there, the industries are there, and vehicle pollution is there, and this industry and vehicle pollution is going to emit lot of nitrogen compounds and sulfur compounds. ये पूरा लिख के प्रॉब्लम फिर नीचे में बोला, in that particular state the people they start detecting metals in their drinking water, metals, heavy metals or metals in their drinking water, which are very dangerous, and they develop some kind of symptoms by drinking this this water contaminated with heavy metals or metals. How you can correlate this incident of water contamination or kind of thing? Okay, how you can correlate this with air pollution in that particular state? तो सब बच्चों ने भाई जो अपने अकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी है बीटेक के बच्चों की, राम कहानी पूरी लिख के आए वहां पे कि सर मैं लिखूंगा जी, छोड़ दो। लेकिन 5% या 2% बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने सही उसका आंसर लिखा। एक्चुअली होता क्या है बेटा,
बात यह है कि आपका जो सॉइल है, आपकी जो सॉइल है, बाय डिफॉल्ट सॉइल जो ये कंक्रीट है, ये सब चीजें आपके क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, एसिडिक नहीं होते ये। नेचर ने इनको उस फॉर्म में बनाया है और इसमें आपकी मेटल्स हैं। और जनरली जब नेट पे आप चेक करोगे चीज देखना कि मेटल की लीचिंग सिर्फ एक कंडीशन पे होती है, जब आप उसको एसडी कर देते हो। मेटल की लीचिंग तब होगी जब आप उसी कंडीशन एसडी कर दोगे। व्हेन यू गो टू एसडी कंडीशन द मेटल लीचिंग विल बी देयर। द मेटल लीचिंग इज ऑलवेज देयर। Metal leaching is always there when you have a extreme SD conditions. तो सॉइल को नेचर ने बनाया अल्कलाइन, लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज release a huge amount of NOx and SOx in the atmosphere. And when the huge amount of NOx and SOx are being released to the atmosphere due to reactions, as secondary pollutants are formed that are nitric acid, sulfuric acid, and all kind of acids. And when they fall with precipitation, soil becomes acidic. When the soil becomes acidic, there might be chances that the metal present in the soil or this kind of component, they may leach out. Once they leach out, no doubt they can reach the groundwater. Once they reach the groundwater, it can be there in the drinking water. So that was a reasonable answer. By default ही है भी है बेटा, ठीक है? So I'm talking about these kind of things. So how to correlate it? So isko, that's why I'm saying we have to get rid of these kind of things by thinking about alternate technologies. Now, sources of air pollution go through very fast, beta. So this is something I'm talking about: the natural as well as a man-made anthropogenic. Okay, natural, then man-made or anthropogenic. Okay, so basically again the same thing. Natural are your no doubt volcanic eruptions, you cannot get rid of; dust storms, you cannot get rid of; forest fires and pollen grains. Okay, anthropogenic and man-made are basically three categories: point, area, and mobile sources. So point sources, basically you're talking about at particular point which you can really point out, that is yes, from this the pollution is coming out: industries, power points, power plants, sorry, coal power plants basically. And areas, open burning, like stubble burning is there, residential heating is there, suppose you know from this kind of area actually heat is coming out. And the mobile sources, and this is something very dangerous. We're talking about vehicles. These are mobile sources. So they are moving. So they are releasing operation here, pollution here, here. So you cannot pinpoint. So this is something very dangerous. Okay. So these are sources of air pollution. So you need to know very well, because you need to work upon these kind of things, and you need to have the sources first. Thermal power plants, industrial activities, biomass burning. Biomass burning, you know this what biomass burning, beta? Biomass burning is basically I'm talking about. Just I explained to you the villages. The open burning is there. The cow dung and the fuel is being burned. Domestic activities, and this is red because this is more dangerous. Transportation, because it's not easy to get control on these kind of activities because they are moving. So you need to work upon their emissions very effectively. And that's why when you talk about the European countries, their Euro standards are much tough than the Indian standards. And if you do a little variations in the emission standards for the vehicles, your company is gone. You must be reading about the Volkswagen activity. The company was banned just because they have manipulated the emission standards, Euro 6. Okay, is that okay, everybody? So 9:30 is there, so I'll take few 4 minutes. And this is basically when you are talking about emission sources in gasoline fueled coal. So you have from the evaporative hydrocarbons, carburetor, then evaporative hydrocarbons in the fuel tank. Okay, so these are the emissions basically going on. Okay, so once about do about combustion process. Sorry, so in the perfect engine, no doubt what is happening, oxygen is being taken in. When the oxygen is being taken in through different cycles, the air convert all the hydrogen present in the fuel to water and carbon, no doubt carbon to the carbon monoxide dioxide, sorry. So this is complete burning when you're talking about, that is fuel plus air. Then you have this kind of thing.
So I discuss this thing and I'll leave open form for discussion. So once we're talking about emissions, engine emissions versus combustion as strategy, and you have two kind of engines basically which are there. That is spark ignition and compression ignition. So when so about talking about engine emissions, spark ignitions, they are basically going to release NOx and hydrocarbons and monoxide. When compression ignition, when they are being studied, the maximum emissions, engine emissions are coming out are the particulate matter also. Okay, so these are four strokes of IC engine. So I think so it's 933 is there. So I think so 940 is the limit. So I can stop here because uh, I can leave open this for discussion.